जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. And I don't want to miss out on any points. Now the first thing, okay, ma'am said, speak to express, not to impress. And it is for this reason that most of the times we don't speak, because we feel that we will not be able to impress. So we don't express. ओ की कहूगा, ओ की कहूगा. कहते ने सब तो बड़ा रोग की कहेंगे लोग. Let them say, you can't stop everybody's mouth. You can't speak. ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ. ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਣਾ. ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੋ ਗਏ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ. Now, you just listen to a talk on AI. Isn't it? Very nice, very impressive. One thing, the learning was that prompts are very important. Prompts are जो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, instructions ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ result ਦੇਗਾ. That is artificial intelligence. This is right side of the brain, left side of the brain. It is our intelligence. Here also it is very important. The prompts which you give to yourself, to your brain, to your mind, they control what you actually do. Understood? Any comparison? ऐसा होता है कि नहीं? I have to give a talk. और मैं अपने यार जे में तो गलती होगी, जब मैं ठीक तरह नहीं उसे बोल सकिया. Suppose my mind goes blank. Suppose everybody laughs at me. So these are the prompts which are going to my mind. And what will happen when I give a talk? I will not be able to result. Those things will become real. वही result मैंने मिलेगा. उसे try कर लेना. Draw a line or keep some bricks and थोड़े थोड़े दूर से try to walk over them. And एक बार बंच आ जान देना कि कितने मैं गिर ना जावा. And see what is the result. अगले स्टेप तुझे जरूर नीचे गिरोगे. Because our mind got a prompt. गिर ना जावा, गिर. उन्होंने नहीं सुना, उन्हें गिर जाना. उसे गिरा देता है. So this prompting, use the correct prompts, have belief in yourself, you will get better results. You will be able to express yourself better. दूसरी चीज सीखी AI दी. Can it speak for you? Can it speak for you? AI? No. It can just तुझे 6 चीजें दे दो, वो बोल देगा. बट उधर को चेंज करना कर देगा. That capability only we have got as of now. आगे जाके की होगा, I can't say. So it is giving you all the data. Now using it, you have to use it. And towards that, how to use it properly, few points are there. First thing is think. When you are thinking, prompts are going. Structure, कि मैं की बोलना है. And then speak. You see, when you were very small, tying a lace of your shoes, it needed constant prompts. पहला इन्हों ऐसा करना है, फिर ऐसा करना, फिर इन्हों खिंचांगे, फिर ये होएगा. That's how you learn. टी-शर्ट पानी है, पहला शर्ट सिर पाओ या पहला हाथ पाओ, फिर सिर पाएंगे, फिर. Today do you think? शूज आजकल बच्चे ऐसे लेसेस खोलते ही नहीं है, पर जे कहते खोलने बनने होन. Do you have to think? ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਚ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੇਸ ਦੇਣੀ ਹੈ. They are all gone inside. So they become your structure. They give you a structure. When you think, initially ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗੇਗਾ, but gradually it will become part of your life. ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, जब बाइक चलानी सीखी औखा लग गया से, कार चलानी सीखी औखा लग गया से, and now you don't have any problems.
बिना सोचे समझे आराम नाल सी गड्डी चला देंगे. Same thing will happen. So break it, think, structure it, then speak. Ma'am said ऐसी शशि थरूर नहीं बनना है. So clarity is important rather than complexity. Complex नहीं करना आपसे अपनी गल्लां ਨੂੰ. आसानी ਨਾਲ समझ आ जाए. What I want to convey gets conveyed as I want to convey, ताकि अगला बंदा वही मीनिंग समझे जो मैं कहना चाहता सी. Now here confidence is very very important. I say it is the mother of all qualities. When I teach my students on personality development, if you have confidence, can you do anything? Can you show your intelligence? Can you influence anybody else in a discussion? No. सब तो पहली चीज है confidence. If confidence is there, then you can look for perfection. पर ऐसे perfection एक बहाना बना लेने हैं. यार आज चीज सीखो जो फिर मैं बोलूँगा. आज चीज सीखो जो फिर मैं बोलूँगा. So we turn it into procrastination. टालते रहने हैं. When we are communicating, it's a two-way thing. Now it is one way, but otherwise it is two-way. You speak, you listen. Discussion कर रहे हैं, you have to listen. That is something which most of us ignore. जब अगला बोल रहे होता है कि प्लान कर रहे होते हैं जवाब की नहीं है, rather than listen to the other person. And make it a point that I will make one improvement daily. एक कहावत है, बूंद बूंद से one drop, one improvement every day. By the end of the year, 365 improvements. उन्हीं की लोड़ ही नहीं है. कर दूँ किसी को कर दूँ. Next कर दूँ. Okay. Now there are some foundations I am going to give you. जिन्होंने तुझे इस्तेमाल करके फाउंडेशन कादे लिए होती है, नींव है. एंड ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ अपनी बिल्डिंग, अपना महल खड़ा कर सकते हो. फर्स्ट थिंग, लिसन मोर देन यू स्पीक. अंडरस्टैंड बिफोर स्पीकिंग. बोलने की जल्दी ना करो. थिंक बिफोर स्पीकिंग. सेम थिंग, पॉज, स्ट्रक्चर एंड देन डिलीवर. बी क्लियर, नॉट क्लैरिटी वाला. स्टे कॉन्फिडेंट. डोंट बिकम एरोगेंट. देयर इज डिफरेंस बिटवीन confident and arrogant. There is a difference between assertive and aggressive. You have to be assertive. Assert your point. You want to say no, say no. You don't want to say yes, don't say yes. But अगला की सोचेगा, एक ही होएगा, उस चक्कर ना करो. Now speaking skills. Speak slowly. Maintain eye contact. Now the next very important point. Avoid filler words. आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. You see, I was going like का की मतलब है तुसी जा रहे सी तो उधर. You want me to like? ऐसा करता है ना तो ना. तो like बोले जाते हो. दूसरा, so that shows to the other person that I don't have clarity. It is covering up for the जिला मेरे अच्छे हो रहे बोलन गैप है. You know, if I know, then why are you telling me? You know. So such words are called fillers. There are many other words. Using them conveys a very bad impression on the person. If you're not trying to impress, but the other person is getting negatively impressed. Yes, wherever possible. मैं कितने नाल गल करा, मैनू कंपनी नहीं है. Find company. For NDA, I was having a batch. That boy told me, sir, we have made a group. Corona the time see. They made an online group. And on that Meet, Google Meet, or on Zoom, every day they were sitting, discussing things which were required, practicing group discussions. Can you believe, out of those 10 students, 6 of them joined the same course for NDA. बाकी तो उन्हें पता नहीं, because my student had joined. So this is the power of जब तुसी दूसरा मिलके गल करते हो.
ਪਾਵਰ ਆਫ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਯੂ ਜੁਆਇਨ ਡਿਬੇਟਸ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, learn from that. Group discussions come very, very handy. Okay. Vocabulary, read. This is something we avoid. ਅਸੀਂ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते हैं, we go for in shots. हर चीज़ का शॉर्टकट चीज़ है in shots, और शॉर्टकट फिर बाद भी तकलीफ देता है। So read the newspaper. You want to develop your communication skills in English, read English newspaper. किसी और लैंग्वेज करना है ਉਹਦਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੋ ਰੀਡ ਡੇਲੀ ਬੁੱਕਸ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, any article which is available anywhere, net ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Make it a point that I will learn 5 words every day. Not difficult. You are reading, you will find that there are certain words we don't understand. Underline करो, note करो, ਉਹਦਾ meaning ਦੇਖੋ। ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਵਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ, ਡੂ ਇਟ। ਯੂ ਸੀ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਸੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਟ ਕੀਪਸ ਫਿਲਿੰਗ ਇਟ ਅਪ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵੀ ਜਸਟ ਰੀਡ ਐਂਡ ਗੈਟ ਦ ਮੀਨਿੰਗ। ਸੋ ਗੈਟ ਇਨ ਟੂ ਦ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਘੋਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਟਲੀਸਟ 5 you will be able to remember. ग्रामर पार्ट कम्स लेटर, हालांकि स्कूल जैसी ग्रामर सीखी हुई है। सो पॉलिशिंग ऑन द ग्रामर डजंट टेक मच टाइम, vocabulary and confidence will take more time. Body language already been told by ma'am. Develop your writing skills, that is also part of communication. You read some article, try and make a summary of that. प्रेसी राइटिंग उन्हें पढ़ के नहीं करनी। Whatever has come here, try to summarize it. It will help you in developing your written communication skills. बोलते हुए सेंटेंस जितना छोटा रख सकूं बेटर है। Meaningful sentences, properly structured. Writing वाले bullet points. You can see the bullet points here. और एक बार तुसी उन्हें सबमिट कर दें हो किसी भी, just go through it. Listening skills, don't interrupt. Don't interrupt. Whenever you have a doubt, ask a question to clarify that, not just for the sake of asking. Paraphrase what the other person said. जो उन्हें समझा उन्हें समझो, like a in a structured way, understand. अपने कोल रख लो. Show engagement through, जब कोई बोल रहे हैं किसी की गल, he has to know that you are interested. हल्का जैसे जरा आगे होके, suppose we are sitting, जैसे उधर बोलूं थोड़ा जिहा पेन करते हैं, we nod our head a little, यानी कि ऐसे ही करते रहो डॉल मंगन, हल्का जैसे nod. So other person gets a listening कि yes, what I am saying, अगला बंदा सुन रहा है. Build your confidence. What are the confidence builders? Practice करो. Take your phone. Everybody has got a smartphone now. Video recording facility हैगी है. सारे को ट्राइपॉड होंगे, नहीं है तो 3-4 किताबा रख के रख दो थे, एंड रिकॉर्डर ऑन करो, द वीडियो रिकॉर्डिंग, एंड अपना जो भी कहना है, प्रिपेयर योर टॉक एंड डिलीवर इट. कई लोग कहते हैं कि मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो. मिरर के सामने तुम करोगे तो यू कैन डू ओनली वन थिंग एट ए टाइम. Either you can speak or you can see. So the best is record. जैसे सी वीडियो चलो रिकॉर्ड कर लेंगे, आफ्टर दैट जस्ट प्ले इट. तुसी देखो दोनों अपनी गलतियां अपने आप पता लगेंगी, कितने मैं अटक रहा सी, कितने मैं इदा कर रहा सी, कितने मैं इदा हो रहा सी. You can see that and then correct it and do it properly.
अपने कंफर्ट जोन तो बाहर निकलना, जो भी एक्टिविटी तो बाहर है वो करो. वी डोंट वांट टू लीव आवर कंफर्ट जोन. डू इट. गलतियां इज नॉट ए गलती, इट इज पार्ट ऑफ लर्निंग. नाउ कम्स डिजिटल कम्युनिकेशन. आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गल हो ही रही सी. When you are communicating digitally, be to the point, be concise in your email, in your message. Avoid all caps. I think you all know. So I will skip this. Now, this is something very important. I will leave this copy of this here, reflection sheet. Every day you have to reflect upon this. कि आज मैं की किया. These are the headings. As far as पहला उठे area, I know. Mind नहीं कितना. So what is the area in which I am going to reflect on and give a score? Decide 1 to 5. 1 is the best, 5 is the worst. 1 is the best, or uda ulta karo, whatever you feel, 1 to 10. And then mark yourself. Give yourself a score. In clarity. आज मैं टॉक देती, आज मैं किसी ने गल की. Was I clear? Yes. How much? Very clear? Absolutely clear? Give 10. No, not very clear. 3. Like that, on clarity, on confidence, जो मेरा स्ट्रक्चर सीगा, my body language and my listening. On these 5 things, score it. Ask yourself, my strongest improvement this week. Write it down. My most frequent mistake. Note it down. Socho. Not. It can be feedback what others tell you, and you yourself also know. One habit I will change in the coming week. So this is your weekly reflection sheet. Then there is something called line clarity test. Okay, this is the point. I want to tell you a point that exercise improves focus. Reason. Think of the reason. Why am I saying this? The reason, or give it to yourself, because it increases blood flow to the brain. That is why we can. So you said something, you gave a point, you gave a reason. Now example. उसे चीज का example देखो. That's why we feel fresh after sports. खेल के आना, I feel more refreshed. So these are the things you can do it on daily basis, you can do it on a weekly basis. It will help you in improving immensely. Many of my students have benefited by this. 4 बार SSB से भी जाके रिजेक्ट हो तो बाद they have joined the academy because they followed these things. So if you want to improve, yes, you will have to do something. And here I am telling you that these are the points. You can do this and assess yourself. Any questions on this thing? Anyway. Okay, anyways, I will leave a copy of this, and whatever else I have told you, I will leave it here, and maybe they can make copies and give it to you, or it can be shared online, whichever way. Thank you very much. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह.